inability of your body to change its state of rest. It is the inability of your body to change its state of rest is called the inertia of rest. Means we can tell it is the opposition offered to change its state of rest. That is called the inertia of rest. Already we have discussed that inertia of rest. Example for that. In day-to-day life, how you are getting the inertia of rest, where you get the inertia of rest. Suppose a man is standing in a bus which is at rest. The bus is at rest. The man is in contact with the bus also is at rest. Whenever the bus suddenly moves forward, what happens? The man falls backward. Why the man falls backward? Because the feet of the man was in touch with the one contact with the bus. Due to the contact force, the feet moves forward, but upper portion of the body were not pulled. The upper portion of the body was not pulled by the bus. So due to the property of inertia of rest, as it was in the rest, it will be trying to remain at rest. Due to this reason, it falls backward. The man falls backward. And we have kept in the last class up to this one. This is the inertia of rest. And in the similar manner also, let us compare that writing. Uh, and similarly, you can deal with the different example. Anybody can give me the example for inertia of rest? Any one example. Anybody can tell me? Sir, falling of mangoes from the tree. When Sir, when someone shakes the tree. Huh? sir, when someone jumps out of a vehicle, he falls down due to inertia. Sir, I when am we talking shake about any the. tree. Sir, when we shake any tree, the fruits of on it falls down. So how the inertia of rest is applied here? You tell me. Sir, the lower part of the tree comes in motion with respect to us when we shake it, and the upper part of the tree tries to remains in rest. That's why inertia of rest is applied here. Which one is inertia of rest? The mango or the fruit due to the inertia of rest falls down. Sir, the fruits are showing inertia of rest. They were initially at rest, but later, when the tree is shaken, the fruits still try to remain in rest, but they fall down because they uh, uh, try to be on the same position, but uh, because the tree is shaking, they fall down. Hmm. Another example. Sir, When when bus a man starts tries to rest, jump we out tend of a to bus. Sir, dust particle in the when a bus starts to move, we tend to lean backwards due to inertia of rest. Due to inertia of rest, it moves backward. The dust particles are separated from the blanket. Your point of telling is that. Any other example? So when a carpet is beaten with any stick to remove the dust That is particles. one thing. One thing. The dust particles are separated. That what he told. The dust particles are separated from the blanket whenever the blanket is beaten. So it is due to the inertia of rest. The dust particle gets separated due to the inertia of rest. Okay, that example we can explain it here. Suppose this is the blanket. This is a blanket and dust particles are here. This is the blanket. Suppose I am writing here and dust particles are these are the dust particles. The dust particles are attached to that blanket. Whenever the blanket is bitten, the blanket displaces. The blanket को ठोकोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैंकेट डिस्प्लेस होता है उनका पोजीशन ब्लैंकेट इधर आ गया यहाँ तक आ गया the next position blanket यहाँ तक आ गया the position blanket because whenever you are beating the blanket or shaking the blanket changes its position due to the applied force. So what will happen
as the blanket and dust were at rest, and the dust particle, due to its inertia motion, because it will be trying to remain at rest, so they will be trying to come back to their original position. Means blanket already displaced हो गया, ये होता है dust particle. The blanket का जो dust particle था वो अपना position आ गया, ये blanket dust particle है. So blanket का position is already changed, and due to the inertia of rest, the dust particle will be trying to come to its original position. So it will be possible if the dust particle will be separated from the blanket. So that due to this reason, the dust particle gets separated, and due to the gravitational force, it falls down. They will be separated due to the inertia of rest, and they fall down due to the gravitational force. Again, the force applied on it, so it gets fall down. So this is the dust particles get separated due to the inertia of rest. Another example, you should write all these things. You have to prepare a note on this. Another, Sir, when a car makes turns, we are. that is not the inertia of rest. No, that is inertia of motion. I want anybody to. Sir, when get the accident inertia of rest. takes place, accident. What happens? Sir, when a car and a truck means big and small vehicle, they collide with each other. The car suddenly stops, and the man inside the car or the person inside the car comes out of the car. Means he's thrown out. But that is inertia of motion, na? That is motion. That is inertia motion. But you So just try to how? understand what is the inertia. Because it was The the car man and was the man moving alone later on. was. Okay, It comes okay, to sir. rest. So that is the inertia motion. I am talking about the inertia of rest. So when we Another place a example. cardboard on a glass and above that cardboard, when we place a coin and strikes the cardboard, the coin falls inside the glass. Which one is the inertia? Where is the inertia of rest? So the coin tries to remains in rest with respect to the cardboard, and when the cardboard is striken, the coin also the coin loses its inertia and then it falls down. Loses its inertia. Then it falls down. Sir, loses its state of rest and it So why? falls down. Why? No, Inertia it does of not rest? lose its state of rest. Now, my point of telling is that it is not taking places like that. Suppose this is the glass tumbler, and cardboard is here placed over it. You talk about the cardboard, and the coin is placed here. Whenever the cardboard is given a jerk, is pushed suddenly, due to inertia of rest, the cardboard is coming out. The cardboard is coming out. Then the coin should be there because it was at rest, and it will be remain at rest. But the coin falls down. You told that coin falls down. That means it loses its inertia of rest property. Due to inertia of rest, actually what happens here, the total force acts on the cardboard. Cardboard displaces, and due to inertia of rest, because no force is applied on the coin, as the coin was at rest, it will be remain at rest. So the coin will be at rest here. ऐसे रहेगा. जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से कॉइन नीचे गिर जाता है. अदरवाइज बट हम लोग का उसका जो प्रॉपर्टी था पहले रेस्ट, इट विल बी रिमेन एट रेस्ट फास्ट, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई किया देन इट फॉल्स डाउन, and due to inertia of rest the coin will be swinging there, will be hanging there only. जब बाहर से कहीं फोर्स नहीं लगेगा तो कॉइन वहीं रह जाएगा. That is due to the inertia of rest. Any other example? Suppose we can experience a jerk when a lift starts to move up or down. We experience a jerk due to inertia of rest. that is due to inertia of rest. ठीक है. Any other?
Sir, Any a other? person standing in a train falls backward when train suddenly starts moving forward. That is inertia braced. Very good. Any other? Others are sleeping, I think nobody is interacting. Suppose a glass window, glass pane. Whenever you throw the, if you throw the, if you fire the bullet, it makes a clean hole. It makes a clean hole. But you throw the stone, it cracks it. Suppose this is another palm. If you take it, if you throw the stone, it gets cracked. Like that. ये क्यों क्रैक हो जाता है? Anybody can tell me if you fire a bullet to the glass window, it makes a clean hole. Whenever you throw the stone, big stone, to the glass window, it cracks. Why? What happens here? Because bullet has high velocity. It was the no doubt. It is understood the speed is more in case of that bullet, but speed is less in case of the stone. What happens here? The stone, the bullet is having high velocity. That means we can talk about that high momentum. In other way, you can tell that the bullet is having the motion, high motion, and whenever it strikes the glass pane, the portion, whatever the portion the bullet strikes, the total motion of the bullet will be transferred to this portion. The total motion of the bullet will be transferred to this portion. Due to this reason, it makes a clean hole. Means the motion of the bullet is not transferred to other portion of the glass window. Glass, ये जो glass खिड़की है ना, जिस पोर्शन में टच कर रहा है उसी पोर्शन को निकाल देता है, क्योंकि उनका मोशन सिर्फ इसी पोर्शन को ही टच करता है, उनका मोशन ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि हाई स्पीड में है. इस केसेस में व्हाट हैपेंस हियर, whenever you throw the stone, the motion of the stone is not so speed and compared with that of the bullet, so the motion of the stone is transferred to the other portion of the glass pane. इनका जो मोशन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, इधर 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 से डिफरेंट ट्रांसफर होता है. सो द पार्टिकल, जो ग्लास का जो दूसरी पार्टिकल है, लोग सब रेस्ट में बैठे थे, दे वेर एट रेस्ट. whenever the force is transferred to that other portion, they start vibrating, means their inertia of rest is destroyed here. The particle, as the inertia of rest is destroyed due to the application of the force, they will start moving, they will tend to move, they will start to vibrate. So वो vibrate करना शुरू करते हैं, इसी कारण से वो crack हो जाता है. ठीक है? And because they destroy their inertia of rest here. This is the example. Clear? And you must be knowing that whenever the bullet is, policeman क्या करता है ना, चोर को पकड़ने के लिए बंदूक से फायर करता है बुलेट. तुम लोग बुलेट देखे होंगे. जो बुलेट, ये बुलेट क्या होता है, ये बुलेट होता है ऐसे ही रहता है, बनता है ना, बुलेट ऐसे रहता है और सामने वाला ब्लॉन्ट ऐसे कर देते हैं. ठीक है, ऐसे ब्लॉन्ट करते हैं, पर ऐसे करते हैं, मान के चलो थोड़ा ऐसे करके ब्लॉन्ट कर देते हैं, इस स्टेप का ब्लॉन्ट रहता है बुलेट. तो इफ द बुलेट शुड बी ऐसे बना देते, पर शार्प बना देते, तो क्या फायदा क्या होता है? Why the bullets are not formed like that, very sharp, and why the tip of the bullet is made blunt? क्यों बनाया जाता है? उसके कारण से हमको इंटेंशन है चोर पकड़ना है, ठीक है ना, तो इसीलिए पुलिसमैन फायर्स द बुलेट टू द थीफ. आज ही फायर द बुलेट टू द थीफ, द बुलेट ब्लॉन्ट के कारण से उनके शरीर के अंदर घुस जाता है और शरीर से बाहर नहीं निकलता है. शरीर के अंदर घुस जाता है, शरीर के जो डिफरेंट पोर्शन, सेल्स एंड टिश्यूज आर देयर, they were at inertia of rest, and the motion of the bullet will be transferred to the other portion of the body, inside the body. So what will happen? Other portions, they loses their inertia of rest and start vibrating, means the thief will get severe pain. जब दाढ़े मसल्स पे वाइब्रेट करना शुरू करेगा, that means inertia of rest उनका डिस्टर्ब होगा, so they start
that means people get pain. So इसलिए उसको ब्लंट कर दिया जाता है. शार्प बोलने से क्या होगा, एक थिप को फायर किया, वो शार्प करने से सपोज फायर में लग गया, वो फायर का आर पार हो जाएगा. आर पार हो जाए तो वो थिप वो दोनों साइड को बंद करके हॉस्पिटल दौड़ जा सकता है. बट इस केस में जा ही नहीं सकता बिकॉज बुलेट इज इनसाइड द बॉडी and they are destroying the inertia of rest and he's getting the pain, so he'll fall down. This is the inertia of rest. In everyday life we'll be finding the inertia of rest as the different portion. So that your duty is that you have to write the definition of inertia of rest and at least 3 examples, 3 illustrations with explaining exactly what does the inertia of rest means. In the similar manner, if those who are not understanding the inertia of rest exactly, then you just try to understand the inertia motion. From there, you can understand what is that inertia motion. Another part is the inertia motion. Inertia of motion. Inertia of motion. So this is the property of the body. What the inertia of motion tells. It is the tendency of a body to remain in the state of uniform motion in a straight line. ठीक है ना? It is the tendency. It is the right. It is the tendency. Definition exactly लिखो हाँ. It is the tendency. It is the tendency of a body. It is the tendency of a body to remain in its state of motion, state of uniform motion, state of uniform motion, remains in a state of uniform motion in a straight line. Means no force is applied and it will have the tendency to remain in the state of uniform motion. Means the body, the object will be continue moving in uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external forces. Unless it is compelled by some external forces. This is the inertia of motion. We are talking about the inertia of motion. Example बताओ मुझे, 1-2 example. Sir, when the moving bus stops, we are pulled in frontwards. चलो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया. Sir, if a ball is kicked and for some time it is not disturbed or it is not kicked by someone, it moves in a uniform motion in a straight line. नहीं बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ तो एक्चुअली इनर्शिया, देखो इनर्शिया, दिस इज द प्रॉपर्टी. आई टोल्ड यू दैट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, इनर्शिया होता है एक्चुअली वो टेंडेंसी है, ठीक है ना. और उसी टेंडेंसी के कारण से हमेशा बॉडी चाहता है वो मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन में और स्ट्रेट लाइन, हमेशा वो चाहता है, बट वो इसलिए नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फोर्स अप्लाई होता है. You have a certain tendency now. Suppose if the Surama you are telling that you have a certain tendency to take toffees. घर में तुम्हारा पास टॉफी लेने के लिए वो टेंडेंसी होता है. आज चॉकलेट मम्मी ले आए तो खाने के लिए मन करता है ना. वो जो टेंडेंसी है, बट तुम लोग खा नहीं पाते. क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कारण से मम्मी ने फ्रिज में डाल दिया और लॉक कर दिया, तो तुम लोग ले नहीं पा रहे. बट यू हैव द टेंडेंसी. उसी टेंडेंसी के कारण से कहाँ से तुमको मिल जाए तो ऑटोमेटिकली तुम खा जाओगे. नहीं, कोई पार्टी जा रहा है, खाली वहां पे चावल दाल सब्जी लगा है और कहीं पे यू विल फाइंडिंग द ओनली द टॉफीज है, टॉफीज. सब लोग तुम लोग वहां पे दौड़ के जाके टॉफी ले आओ बिकॉज यू हैव द टेंडेंसी टू टेक टॉफीज. चॉकलेट लेने का टेंडेंसी है. सो बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, जब तक उनके ऊपर फोर्स कोई नहीं लग रहा है. So that tendency is called actually that inertia of motion. My point of telling is that you should not
that this relate in different sense. Inertia motion कौन कहाँ पर टेंडेंसी दिख रहा है? देखो, suppose बस चल रही है, if the bus is moving here, the bus is moving, if the man is moving here. If the bus suddenly stops, if the bus stops, so suddenly whenever the bus stops, the upper portion of the man was in motion, वो मोशन में था, वो हमेशा ट्राई करेगा मोशन में रहने के लिए, हमेशा ट्राई करेगा मोशन में रहने के लिए. सो उसी टेंडेंसी के कारण से ये आदमी क्या होगा, ऐसे करके गिर जाएगा ना, ऐसे करके बेंड से ब्रेक लगाया, वो तो आगे चला गया. आगे क्यों चला गया? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है. ये क्यों चला गया? क्योंकि पहले बॉडी मोशन में था, वो चाहता है वो मोशन में रहने के लिए, वो चाह रहा है. जब हम रोक दिए तो वो चल गया, मतलब वो आगे गिर गया. बिकॉज द फोर्स, whatever I am talking, this is the inertia. This is because due to the inertia of motion, the man falls in forward direction. Inertia motion जब बोलूंगा मैंने, बॉडी को पहले मोशन में रखना है हर जगह में. Suppose the train is running, if somebody is trying to jump from the train, if he jumps from the train, what will happen? The train was moving along this direction. If the man jumps from the train, because the man was in motion, वो पहले मोशन में था, जब जंप करोगे उनका बॉडी ऑटोमेटिकली, तू चाह पर नहीं चाह, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है. बॉडी, द ऑब्जेक्ट automatically it will be gaining that property, and due to that property the object will be maintaining the inertia motion. Maintaining the motion, will be trying to maintain the motion. इसी कारण से बॉडी फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली. तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए तुम फिजिक्स क्या करता हो, अपना काम ही करता है. फिजिक्स विल डू हिज वर्क. whenever you are jumping from the train, as your body is automatically moving in forward direction, so to keep it in balance, to keep it in balance, you have to run in the direction of the train. क्योंकि वो बॉडी तुम्हारा भी ट्रेन तरफ चला जा रहा है, समझ रहे ना? जैसे दादाजी के छोटे बच्चे को, पोता को लेके गार्डन में खिलाने लेके जाते हैं, तुम देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, ऑटोमेटिकली दौड़ते हैं. जब ऑटोमेटिकली दौड़ते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए दादाजी उनका पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, बिकॉज टू कीप इट इन बैलेंस, इक्विलिब्रियम. So whenever you jump from the train, your body automatically will be running in that, because due to the inertia motion. So you have to run in the direction of your body. तो बॉडी आगे जा रहा है, मतलब तुमको दौड़ना पड़ रहा है, तो नहीं तो गिरोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी गिर जाएगा, तो तुम गिरोगे, चोट लगेगा. सो ड्यू टू दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया मोशन. व्हाट इज द इनर्शिया? दिस इज बिकॉज द इनर्शिया मोशन. वो जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. ये एग्जांपल, यू हैव टू राइट दिस एग्जांपल, इलस्ट्रेशन है. नंबर 2 एग्जांपल देखो. नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग, यू मस्ट बी सीन इन द क्रिकेट. Cricket player, what he does, particularly the bowler. The bowler throws the ball. मुझे बताओ, यहाँ पे 3 स्टंप है. The bowler runs a long distance before throwing the ball. The bowler, cricket bowler, has to run a long distance. बहुत दूर से दौड़ के आता है. दौड़ के आने का बाद वो बॉल को फेंकता है. Why? कारण हो जाता है, the bowler is holding the ball and he is running a long distance. Due to this reason, the ball gains motion. The ball, cricket ball, gains motion, and due to inertia motion, because of it is gaining the inertial properties, the ball is remaining in inertia motion, and due to inertia motion, the speed of the ball increases, because due to the inertia, बॉलर नहीं फेंकेगा भी, दौड़ के आके ऐसे छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली बॉल आगे चला जाएगा. एंड इंक्लूडिंग द बॉलर विल एडिशनल अप्लाई द फोर्स, पहले ड्यू टू द इनर्शिया मोशन प्लस एडिशनल फोर्स, ही थ्रोज द बॉल विथ हाई स्पीड. द स्पेस बॉलर जो होते हैं ना, स्पीडी बॉलर जो होते हैं, जोर से फेंकते, वो क्या करते हैं ना, कुछ दूर से दौड़ के आते हैं और फेंकते हैं.
because the ball gains the inertia motion, gains the property. That property is the inertia motion, and due to inertia motion, automatically it gains some velocity, and he can throw with high speed. I think you must have understood what thing I told it. समझ में आ रहा है ना? Yes, This is Yes, sir. total Yes, sir. wrong total wrong concept में नहीं जाना है, पूरा exact concept जाना. Another is the inertia of direction. You talk about the inertia of direction. What is the inertia of direction? Inertia of direction. Inertia of direction. What it tells? Now, body का properties है. Inertia of direction. What it tells? It is the tendency of a body. It is the inertia of direction. It is the tendency of a body to change by itself its direction of motion. Or it is the it is the tendency of body to remain in the straight line motion. It is the tendency of a body, simple lekho. It is the tendency of a body to remain in a, it is the tendency of a body, tendency of a body to remain in, it is the tendency of body to remain in a straight line motion. To remain in straight line motion, that tendency, remain in a straight line motion. It will be trying to remain in a straight line motion. Always the body will have that, trying to remain in the straight line motion. जब हम फोर्स हटा देंगे, फोर्स हटा दो तो बॉडी जैसे मोशन में रहता ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा. एग्जांपल कैसे लिखो? जगह सपोज यहाँ पे अगर रस्सी से बंधा हुआ एक स्टोन है and it is rotating in a circular path. It is rotating in a circular path. Because the force is acting on the stone. The force is acting on the stone. So due to that, due to the applied force, the stone is bound, and so that it is moving in a circular path. If it will be free from the force, if it is cut out here, यहाँ पे कट कर दो रस्सी को, तो what will happen? The stone flies tangentially, ऐसे करके चला जाता है, ऐसे करके चला जाता है. Because it was in motion, whenever it is free from the force, afterwards automatically it will be moving in the direction of in a straight line motion. So this is the inertia of direction. बहुत जगह में तुम लोगों निकाल सकते inertia of direction है. जैसे तुम लोग दिवाली में ऐसे नहीं लगाते, ऐसे टाइप करता है, क्या चीज उसको क्या बोलते हैं? What it is told, ऐसे करके निकलता है. अनार में ऐसे कर, अनार में ऐसे निकलता है कि नहीं करता? ये जस्ट निकलेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, स्ट्रेट लाइन में चला जाता है. दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और सबसे बड़ा एग्जांपल देखोगे ना, जैसे तुम लोग यू विल बी फाइंडिंग, जैसे मेला में रहता है एक बड़ा चक्री ऐसे रहता है, उनको बट से ना ऐसे घूमते रहते जाओगे. हाँ, जायंट वाला. हाँ, ऑन द टॉप देखो, ऊपर जाओगे ना तुमको लगेगा यहीं से सपोज कट गया, तुमको कट गया, तुम सीधा उड़ के आके यहाँ पे गिरोगे, ऐसे गिरोगे, तो तुमको लगता है, यू फील इट, यू आर फ्लाइंग टेंडेंशियली. तुम ऐसे फील करोगे कि तुम लोग ऐसे उड़ जा रहे हो उठते टाइम ऊपर में. इसलिए डर तुमको यहीं पर लगता है, याद है? ज्यादा डर यहीं पर लगता है. Yes, sir. हियर इट विल बी ट्राइंग, यहीं पर लगता है. हाँ, तो बढ़ते टाइम यहाँ पे केयरफुली रहना, बिकॉज ऑफ यू विल बी फाइंडिंग ए टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हियर इन टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन. और देखोगे मेला में यू विल बी फाइंडिंग, जैसे चक्री जो घूमते ना, घोड़े ऊपर बैठ के जो गोल 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 घूमते रहते, एंड यू विल बी फ्लाइंग आउट टेंडेंशियली. और जैसे ड्रैगन में बैठे होंगे जहाँ पर टर्न करेगा, एंड दैट विल बी फाइंडिंग, हाँ सर, बाहर की तरफ फोर्स फ्लाइंग आउट टेंडेंशियली फोर्स लग जाता है. विल बी फ्लाइंग टेंडेंशियली. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. If you are sitting in a bus on the right side, and if the bus takes a suddenly turn, you will be finding that you will feel it that you are flying tangentially. That is the inertia of direction. This is all about Newton's first law and inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. All these things, I think you just
know it from the Newton's first law. Clear? Again, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. different. तो तुम्हारा एक रोल में दे रहा हूँ that you have to write the definition. Newton's first law. Newton's first law is telling about the inertia and about the force, and you have to prepare a note by your own. You can prepare, huh? There will be no problem, I think. And in each case that you have to write only three examples of inertia. Rest 3 examples, inertia motion 3 examples, inertia of direction 2 to 3 examples. Okay, sir. Okay. And ध्यान देना question sometimes when the Newton's first law of motion is called the law of inertia. Sometime that question will be coming state law of inertia. So you may be getting confused. If the question will be coming state the law of inertia, means you have to write Newton's first law. Newton's first law of motion is called the law of inertia because it is talking, because first law is totally talking about the law of inertia. Clear, right? So suppose you tell me that application of the inertia, suppose it's big stone. So a big stone is kept on the floor and a small stone is kept on the floor. So you tell me that which stone is having more inertia? Big stone. Big stone. Big stone. How do you know? The big Big stone. stone. Because Mass of mass, big stone is greater. it has more mass. It has more mass. That is why it has more inertia. It has more mass. That is why it has inertia, na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, I am not satisfied your answer. How do you know which body is having more inertia? I am not satisfied on your answer. Anybody can tell me? Sir, because big stone has more mass, therefore it will attain to remain in its own position. So it is also remaining its own position. Sir, but how the do you know small it is stone has less mass. That's why No he doubt has it has. less inertia. No doubt it has less mass. So no doubt that you are getting confirmed that inertia depends upon the mass. Inertia depends upon the mass. Mass is more, inertia is more. That thing you want to tell it, na? Yes, sir. Inertia is directly proportional to mass. Directly proportional to mass means more the mass, more the inertia is there. Yes, sir. But how do you know that actually? That is it? That relation will be developed later on. But what is the concept behind it that it is having more inertia by inertia motion? Sir, when we will kick both the stones, the small stone will be easy to displace. That suppose Sir, it the is force to move the bigger one is more. More force is required to give the motion to the bigger one. उसमें 3 लोग suppose उसको 3 लोग उनको पुल करेंगे तो motion will be moving. That means उनका tendency of remaining rest is more. 3 लोग का tendency है. तो इसमें 1 लोग suppose इसको पुल कर दे रहे हैं. मतलब that more force is required to give the motion to the stone. That is why it is having the tendency of 3 persons, नहीं क्या? 3 लोग का tendency उनका रुकने का tendency है. इसलिए inertia rest for the stone is more on compared to this one. So that from this analysis we are just thinking, or we are just relating that inertia depends upon the mass. More the mass, more is the inertia. If it is a motion, suppose if it is a motion, suppose if you talk about a truck is moving and a cycle is moving, the more force is required to stop is truck, because 100 people, if the truck के लिए बहुत ज़्यादा person उनको रोकेंगे, so because it is in inertia motion, to stop it, more force is required, so that inertia motion for this one is more than this one. That means the bigger stone also, the bigger stone और छोटा stone बड़े stone जब motion में है, same velocity में है,
तो ये बड़े स्टोन को रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, बिकॉज इट इज गेनिंग, इट इज हैविंग मोर इनर्शिया motion and compared with the small one. Clear? So this is inertia. Newton's first law is talking about here force qualitatively, and another is inertia. Another is inertia. But in the last class, I was asking one question. Nobody answered me properly. In last classes, I told you, suppose the person is standing here. Whenever the bus suddenly moves forward, जब आगे चला जाता है बस, आदमी ऐसे पीछे गिर जाता है, नहीं? तो ध्यान से देखो, फिजिक्स को फिजिक्स तरीके से सोचो। हाँ, तो फिजिक्स को फिजिक्स तरीके से देखो। मैं व्हाट आई एम टेलिंग, बस तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड फोर्स इज F। क्लियर, समझ में आ रहा है? एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी इट इज फॉलिंग डाउन, नो डाउटली, वो प्रॉपर्टी के कारण से दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल प्रॉपर्टी। But if you look onto the situation minutely, some amount of force is acting on this person. Somebody is pushing this person in backward, yes or no? Somebody is pushing this person in backward or not, yes or no? Yes, sir. Yes, Divya? sir. Yes, sir. Somebody is pushing back. So is somebody is pushing back the person in backward direction. ये फोर्स कहां से आता है? Where do you get this force? ये फोर्स कहां आता है? ये तो बॉस आगे गिरता है, ये पर्सन पीछे गिरता है, तो यहाँ पे जो फोर्स धक्का मारता है, ये फोर्स कहां से आता है? Anybody can tell me? Sir, frictional force. Yes, sir. I was thinking that friction because नहीं, it is against motion. नहीं, दैट फ्रिक्शन ऐसे नहीं होता। देखो फ्रिक्शन क्या ना, फ्रिक्शन तो दोनों बॉडी whenever they will be in contact, there you can get the friction. Pseudo force. Who told? What's your name? Sir, pseudo force. केतन। कौन बोल रहे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? सर केतन। केतन। क्या है pseudo force? यहाँ से सर और सुरो में सुरो का मतलब क्या होता है? Sir, false force. फॉल्स फोर्स means which is exerted, but we cannot see it. We can only feel it. we can feel it only. So somebody should be the creating the source force, so na? Why you are getting here in this case the pseudo force? Okay, whatever. That somebody told it is the false force or the pseudo force, but no doubt the force is acting. Yes, sir. No doubt the force is acting on it. That is equal to. That is also pseudo force. It is told as the pseudo force. So here having the force having no father mother, nothing, none where it is created. That is the pseudo force. We can tell it here. Suppose another thing. Sir, this force is acted on all bodies. No. In this situation, whenever the body will be accelerated in opposite direction, we will be finding some force. That is the pseudo force. Not body. In this case, in some cases, I am telling. Suppose a body is rotating in a circular path. Okay? And you know that centripetal acceleration is directed towards the center. And the centripetal force is also directed towards the center. Clear? So in case a table, already मैंने एक टेबल लिया, गोल राउंड टेबल ले लेता हूँ, एक राउंड टेबल ले रहा हूँ, ये राउंड टेबल इज रोटेटिंग लाइक दैट. तो मैं क्या करूँ, वहां पर कुछ डस्ट डाल दो, डस्ट फेंको, ये टेबल ऊपर कुछ डस्ट रखो. If the round table will be rotated continuously, what will happen? These dust particles will be pushing outward. धीरे धीरे बाहर तरफ चला जाएंगे. मुझे बताओ
जब रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो उस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर तरफ आ रहा है फोर्स है, बट ये डस्ट पार्टिकल बाहर तरफ क्यों चला जा रहा है, बाहर तरफ क्यों चला जा रहा है? तो कुछ तो कहीं से फोर्स एक्ट हो रहा है ना, वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज ऑल्सो ए सूडो फोर्स, दैट इज नेम्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स का हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एंड इट इज नथिंग बट द सूडो फोर्स अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट हैविंग एग्जिस्टेंस। जब तक नहीं घूमेगा बॉडी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको नहीं मिलेगा। सपोज कोई बॉडी को घुमा दो तो यू कैन गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, देन आफ्टर यू कैन गेट द मतलब मान के चलो सूडो फोर्स। पहले मेरे को सूडो फोर्स दिखाओ और मुझे तुम दिखा नहीं पाओगे, ठीक है। एंड वेरी गुड, तुम लोग सूडो नाम भी जान लिए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बच्चे एडवांस जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं सारे चीज, ठीक है। और वो तो मैं ट्राई करके पता कर लूंगा इन व्हिच यू आर गेटिंग योर प्रिपरेशन। इन द नेक्स्ट क्लास सेकेंड लॉ थर्ड लॉ खत्म हो जाए, then we will be finding that at what rate you the people are understanding. Okay, आज इतना रखते हैं। Thank you very much. And the next Thank class you, we will sir. be discussing the second law of motion. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, सर जब मतलब आपने बताया था कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो सर मतलब इनर्शिया तो वेट पे डिपेंड करना चाहिए ना, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट है जैसे स्टोन और हम लोग का ये ले लेंगे, रबर बॉल ले लेंगे, तो सर दोनों का अगर मास इक्वल है तो लेकिन वेट अलग है, तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगा ना, तो हाँ, बात वेट पे देखिए डिपेंड ना, करना जिसका चाहिए। मास मतलब क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर हो गया, वो मास मतलब mg एक्ट हो गया ना। तो हम इसलिए फोर्स वेट इसलिए नहीं बोलते हैं, वेट इटसेल्फ इज ए फोर्स है, वेट इटसेल्फ इज ए फोर्स हो गया ना, वेट मतलब एक फोर्स है। हम इनर्शिया को स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। यस सर। तो इसीलिए मास के ऊपर डिपेंड करता है उसका। मोर मास मतलब ऑटोमेटिकली वेट विल बी मोर mg, यस सर। भले मोर मास मतलब ऑटोमेटिकली वेट हो जा रहा है सर ठीक है? लेकिन अगर अपन कोई आइसोलेटेड अगर वैक्यूम वाला कुछ अगर कंसिडर करेंगे, मतलब जैसे कि स्पेस हाँ वगैरह में, तो वहाँ पर हाँ कैसे